Hello everyone. So here I am in Bandhavgarh, which is in MP. It's the state famous for tigers, so it's also called the Tiger State. And I am currently in the Mowgli Resorts. They have a beautiful property. Here we are. I'll just show around you a bit of it. Bandhavgarh is easily accessible by road from Katni or Jabalpur. So if you're coming from by train, then you can always get down in Jabalpur, take a car from Jabalpur to drive down to Bandhavgarh, or else you can get down in Satna or Katni depending upon from where you are coming. If you are coming by flight, the nearest airport is Jabalpur, and by road it takes around 3.5 to 4 hours from Jabalpur to Bandhavgarh. The road is really good. There's no problem in the road. I'm just taking a small walk around the complete resort. So Bandhavgarh, you can visit this resort any time of the year, but the safari is open only from October till June. I mean June, July onwards, because of the rains the safari is closed. See, you can see all the cottages are like far off, so you can stay apart from the crowd. And here's the swimming pool for them. Although because of COVID, right now it is not accessible to anybody, but still, if you come during the other times, you can always enjoy the pool. See, there are other cottages also. It's completely lush green all around. Actually thinking of going out somewhere in these COVID times. I think I would suggest this is the best place to come in. The cottages are really far, so you don't, and the property is so spread across that you actually don't come in contact with people. Okay, so to give the feel of the jungle, the whole property has bamboo forests all around, and there are these roadways all around the resort where you can just walk down, and they have these cute little lanterns which light during the evening, and they give you a beautiful view. Besides the greenery, you can actually get hold of and look at a lot of birds, different types of birds. A lot of bird watching can be done in the early morning hours, in the evening hours, or during the day if you're not going for the safari. Like you can see, cleanliness is being taken care of a lot. So there are people doing cleaning all around the day, sanitization being happening every time somebody comes in. The rooms are sanitized pretty well. Ventilated, sanitized, everything, so you can just be relaxed. The food is awesome. This is the main reception area, and the dining hall also is situated here. They have these cycles and swings all around the property spread, where you can just sit in leisure, enjoy yourselves. They have these small swings, a lot of play area for the kids where your kids can enjoy, and you can just leisure, take a book, read around, just sit and relax. Okay guys, now let me show you the room, how it looks like from inside. Here are two cozy chairs that are there put inside at the porch, so that you can sit and enjoy your cup of tea. Inside they have a sitting area. This is how it looks, and then you have got water bottles, and then there's this room which is there with, this is a dressing area, and then there's this washroom. Now we have with us Yadav ji, who is the manager of Mowgli Resorts. Now let's just do a quick chit chat with him to understand more about the resort. यादव जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो हमें ये बताइए कि अभी यहाँ पे कोविड के बाद से मतलब कैसे, मतलब
ट्रैवलर्स वगैरह आ रहे हैं, टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं? हाँ, ये कोविड-19 से ये अक्टूबर से थोड़ा कम रहा और फिर ये नवंबर से फिर अच्छा सा, मतलब अपने लोकली टूरिस्ट आ रहे हैं। जैसे पूना, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कलकत्ता की ये नहीं आ रहे हैं। तो अपना मतलब लोकल में ये जैसे अपना जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी से ये काफी लोग आ रहे हैं और इनसे ही मतलब ये पूरा रिसोर्ट वगैरह पूरा रहता है। और उनके लिए हमने जो है कोविड-19 में ये पूरा रूम जो है सैनिटाइज करते हैं, मशीन से सैनिटाइज करते हैं और बाकायदा लड़के हमारे सब मास्क में रहते हैं पूरे, और जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी मास्क और कैप में रहते हैं, हैंडग्राफ ग्लव्स पहने रहते हैं और सब सर्विस करते हैं इसी में। Okay. So as you see, after the COVID, obviously the footfall has been less, but since November it has again grown high. But local tourists coming from MP, Chhattisgarh, Maharashtra has been there, but other places of the country, I am sure because of the travel restrictions, that is less. And they are following a strict sanitization protocol. The people are all the staff is always in masks. The rooms are sanitized very regularly, and everybody is in mask, whether they are in the kitchen area, whether they are in the staff, whether they are in the cleaning area, everybody is in mask all the time. ओके, सो अभी जो है यहाँ पे इस आने का सही सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहता है, मतलब यहाँ पे विजिट करने का? अभी मेन सीजन जो है ये अक्टूबर से और 30 जून तक ही रहता है, लेकिन खासतौर पर सर्दियों में ज्यादा गेस्ट आते हैं। और फिर जैसे आपका अप्रैल, मई, जून, इसमें फिर टोटल जो है मोस्टली प्रोफेशनल फोटोग्राफर आते हैं। अच्छा, और सफारी के अलावा आप यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं? सफारी के अलावा यहाँ पे जैसे अपना टेम्पल है और चेचपुर फॉल है, वो वहाँ पे विजिट कराते हैं लोगों को। और जैसे ज्यादा लोगों की अगर डिमांड रहती है तो वहाँ पे क्या कहते हैं स्नैक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ से पैक करके ले जाते हैं। और हमारे यहाँ पे रिजॉर्ट के अंदर में क्या क्या फैसिलिटी? रिजॉर्ट के अंदर अपने पास जो है स्विमिंग पूल है, लेकिन स्विमिंग पूल क्या है कोविड-19 की वजह से बंद है, लेकिन हमारा फिल्टर 24 घंटे चलता रहता है, तो पानी हमारा क्लीन रहता है स्विमिंग पूल का। गेम जोन्स है जिसमें पूल टेबल है, टेबल टेनिस है और क्या नाम है कैरम है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है और क्या कहते हैं क्रिकेट का भी है। अच्छा। और साइकिलें हैं लोगों के लिए चलाने के लिए, और काफी जो है झूले लगे हुए हैं, है ना, और बच्चों के लिए जो है छोटे कुर्सियां वगैरह हैं और वो झूले वगैरह बच्चों के लिए भी है। तो मतलब एवरीबडी जो भी आते हैं वो एंजॉय करके ही जाते हैं। उसके अलावा जो मैंने पहले भी देखा था, कभी कुछ डांस वगैरह जो लोकल ट्राइबल डांस एक्चुअली में अभी कोविड-19 की वजह से बंद थे, लेकिन अब लोग जैसे आने लगे हैं तो डिमांड करते हैं तो वो प्रोवाइड कराते हैं। ओके, so as you see, they have a lot of entertainment activities that is there, like there are table tennis, carom, volleyball, cricket, you have all the badminton, and there's a kids play area, you can do all those things. Other than that, you can walk around the resort. It has a huge area of walking, and there are pavements made all around the resort. You can walk around the resort, and then in the evenings they have this tribal dances on demand, which because of the COVID-19 obviously now it's not happening, but if there's a group that is coming in, they can make sure that happens as well. So thank you यादव जी आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच, एंड कोशिश करते हैं अब दोबारा फिर से एक बार जल्दी आपसे मुलाकात हो।